Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, Welcome, Pranam, and hello. My name is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Now, this video is a continuation part of my previous video. In my previous video, we had discussed numericals based on quantization of the charges. Right now, if you haven't seen my videos, so you guys can go through the videos. The link of the video is already provided in the bio section. Now, in this video, we are going to discuss what are the various methods responsible or involved for charging the body. And later on, after understanding this concept, we are going to discuss like if the two charges with the different polarities are placing across each other, they will experience a force. So which principle involved behind this force, and that is Coulomb's law. So we are going to discuss a Coulomb's law. So without making any delay, let's get started. So the first part that we are going to start is methods involved for charging the body. So in this thing, first thing that we are going to discuss is charging a body by friction. Second time, we are going to discuss charging a body by conduction. और बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तीसरी बार हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि हाउ विल यू चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन. तो फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ये तीनों पार्ट है जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि बॉडी को क्या करोगे, चार्ज करोगे. तो पहला चीज जो हमें डिस्कस करना है, क्या करना है बेटा, चार्जिंग द बॉडी बाय फ्रिक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रिक्शनल चार्ज, ठीक है. अब इसमें क्या होगा कि हर एक मेथड्स में एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, मतलब कि इफ दे आर स्टेटिंग अ बॉडी, यू आर चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, दैट मींस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट मेथड. बाद में ग्रेजुअली वो डिफरेंट मेथड्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें उनका भी क्या रोल है, दैट वी विल डिस्कस. द फर्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रिक्शन. ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग अ टू बॉडीज एंड इफ यू वांटेड टू गेट इट चार्ज, तो वो दो बॉडीज को क्या करना पड़ेगा, आपको रब करना पड़ेगा. So if two bodies are rubbed together, then definitely one body acquire a positive charge, the other body will acquire a negative charge. And if any body is acquiring the positive charge, that means it consists of less number of electrons. And if other body is acquiring a positive charge, or let's say, if other body is acquiring a negative charge, that means it is acquiring a large number of electrons, right? So here if I am stating it here, if I have a body A, if I have a body B, now they are rubbed together. So if they are rubbed, that means after a rubbing, let's say this body acquires a positive charge, other body acquires a negative charge. So why does this body is acquiring a positive charge and negative charge? So this part I had discussed in my first video. So if you haven't seen, go through it. So if this acquire a positive charge, other body acquiring a negative charge, that means it has a excess of electron, other have a excess of proton. Now the second part, electrons are moving here during the process of friction, right? So what exactly happens when you rubbing two bodies together? In generally जब आप bodies को rub करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मूव भी कराना है, तो मुझे उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी कहां से? तो एनर्जी जनरली मिलती कहां से? हीट के फॉर्म में मिलती है. कि जब आप दो बॉडी को अगर आप हीट करते हो, मतलब रब करते हो, तो बेसिकली वो हीट एनर्जी क्या होती है, इतनी तो सफिशिएंट होती है कि इट विल प्रोवाइड एनर्जी एनफ टू मूव दैट इलेक्ट्रॉन विच वेर इनिशियली बाउंडेड. बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर बॉडी में उसके आउटर मोस्ट शेल में, जनरली मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, आई हैड डिस्कस this structure of atom. Under the structure of atom I had discussed that electrons are divided into a number of shells. Now depending upon the energy levels those electrons are divided, right? तो अगर suppose करो कि if we are discussing about some body which are being rubbed, और उसमें भी अगर मान लो कि एक में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहा है as compared to the other body. हमारे केस में दो बॉडीज है. अब ये दो बॉडीज में क्या हो रहा है बेटा, कि बॉडी बी एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज, which means ए बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं which are loosely bounded. तो अगर जब दो बॉडी को रब किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, कि एक बॉडी को हीट इतना तो एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, दूसरे बॉडी के पास माइग्रेट कर रहा है. So now since these electrons are moving and acquiring here,
So abundance of electrons creates the charge called negatively charged. The other body will have abundance of protons or positively charged. So that's why we are considering it as positive charge. अब ये process क्या हुआ बेटा? As these two bodies acquired a different charge by the help of friction, or when we rub together. So those bodies are called frictional charge. The body are called frictional charge because they have achieved that charging by the help of friction. Now the second part that we are going to discuss is called method of charging by conduction. Charging body by conduction. अब देखो कंडक्शन में क्या होगा बेटा? कंडक्शन में एक चीज मुझे आज समझानी भी है कि तीन पार्ट हम लोग आज समझने वाले हैं, कंडक्शन, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में ये होता है कि जनरली दिस थ्री मटेरियल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. We are considering material as a conductor if it has a large number of free electrons. We are considering any individual material as an insulator when they are having no, or let's say they have an excess of bounded electron. And the third part, the material is considered as a semiconductor when you are placing that material at a low temperature, let's say 0 Kelvin, then it will be start behaving like an insulator. And if you are placing it at an extremely high temperature, it will be start behaving like a conductor. तो ये जो तीनों पार्ट है ना बेटा, कंडक्टर का, इंसुलेटर का एंड सेमीकंडक्टर का, दे आर डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम ईच अदर. अभी जब हम फ्यूचर में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताऊंगा तो वहां पे मैं ये टॉपिक वापस से मैं इसको छेड़ूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंडक्टर को रखा जाता है तो those free electrons are moving opposite to the direction of electric field. Abhi, as of now, I haven't introduced the concept of electric field, so it might be a little bit confusing. So as of now, बस आप ये समझ के चलिए कि conductor is something which has an excess of electron, insulator is something which has an excess of bounded electron, although they do not have free electrons. And the third part is semiconductor, a material which behaves like a conductor at a high temperature, and it behaves like an insulator at 0 Kelvin, right? Or at extremely low temperature. So in the second method, what we are going to discuss, that if I wanted to charge body by a conduction means you have two bodies which are conductor, and the second thing, if these two conductors are made contact with each other, they will be charged. What does it mean? अगर मान लो कि अगर मेरे पास ये दो बॉडी है, let's say body A, again I have two bodies, but the condition is these bodies are charged. Let's say this body is also charged by positively, this body is positively charged, and the other body is also positively charged. Let's say, let's say, why would I need to charge two bodies? Let's say this body A is a neutral, but provided this body is metal, or let's say conductor, both bodies are conductor. अगर ये दोनों बॉडी क्या हो गए, कंडक्टर है, अब थोड़े समय के बाद आपने क्या किया, बॉडी ए और बी को क्या किया, टच कर लिया. सो सिंस दिस बॉडी आर मेड कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, राइट, सो देयर विल बी सम मैजिकल फिनोमेना हैपेंस. व्हाट विल हैपेंस? अगर ये बॉडी न्यूट्रल थी इनिशियली और ये बॉडी क्या है, मैंने कंडीशन ये दिया कि कंडीशन में बॉडी बी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. अब जैसे ही आपने ये बॉडी बी को ए के साथ कॉन्टेक्ट किया, so electron will be attracted toward the positive charge. ठीक है, तो सपोज करो कि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बी के पास अट्रैक्ट होंगे बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर माइग्रेटिंग टू द बॉडी बी, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन बॉडी ए. अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि बॉडी ए से बॉडी बी में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कब तक जाते रहेंगे. आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक जाएगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए. इक्विलिब्रियम मतलब कि यहां का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बैलेंस ना हो जाए, चार्ज नेट चार्ज बैलेंस ना हो जाए. तो बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट बी. जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली बिकॉज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड. तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बी में जा रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप एट बॉडी ए, सो इट विल बिकम्स इक्विवेलेंटली इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. और थोड़ी समय के बाद अगर आप उनको सेपरेट कर देते हो तो व्हाट विल हैपन, बॉडी ए विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड बॉडी बी आल्सो एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पे हमने क्या सीखा, इस प्रोसेस में हमने क्या सीखा
कि अगर मुझे कंडक्शन के थ्रू अगर बॉडी को चार्ज करनी है तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिस बॉडी मस्ट बी इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मीन्स इसमें क्या होना चाहिए कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंपॉर्टेंट। अब ये वाले पार्ट में फ्रिक्शनल चार्ज में क्या होता है, मेथड बाय द फ्रिक्शन में क्या हमने समझा कि इसमें भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जनरली इफ यू आर चार्जिंग द बॉडी देन डेफिनेटली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, बट इसमें मेन पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड पार्ट, देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द बॉडी मस्ट बी कंडक्टर। दिस आर द टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड for if you wanted to charge a body by conductor. Now the third part that we are going to discuss is called charging the body by induction. Charging the body by induction. Third is this one. Charging the body. Charging by induction. So what is the speciality about this third part? This part require contact. Body must be in contact with each other. This part do not require contact. So even if they are not in contact with each other, they are getting charge. So how is it possible? So let's say I have two bodies. Again, I have two bodies. Let's say this body is A and this body is B. Right? Let's say both bodies are initially neutral. They are not charged at all. These bodies are initially neutral. Right? Both are conductor, considering, let's say they are not neutral initially. Now you are bringing a third body. Let's say you are bringing a positively charged body here. Any positively charged body. So what will happen? Can you guess anything? If you are bringing a positive charge here, all the negative charge. Now the most important part is if you are bringing a positive charge here and you are not making a contact with each other. अब यहाँ पे क्या होता है कि positive charge और ये वाला जो body ये दोनों एक दूसरे के contact में नहीं है, बस हाँ ये इसके closer में है. You have bring this positive charge closer to body A. So because it is a positive charge, all the negative charge will be collected at the one edge of the body, and all the positive charge will be presented at the other edge of body. ठीक है? At the same time, let's say you are bringing this body B in a contact, or let's say in a contact with other body. अभी यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर as of now I have developed the charge without making a contact with each other. बस कंडीशन क्या था कि मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल चार्ज बॉडी में लेके आया हूं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द बॉडी विच आर यूजिंग इट एज अ रेफरेंस टू चार्ज अनदर बॉडी, राइट? सो दिस बॉडी इज कॉल्ड चार्ज प्रेजेंट ऑन this reference body is called inducing charge. The charge present on the reference body is called inducing charge, and the charge which develops on the neutral body because of the presence of reference body, this body, the charge in the body is called induced charge. I hope it is clear. You have three bodies as of now. Initially I had two bodies which were neutral, and the third body which were positively charged, and that is my reference body. Without making a contact with each other, मैंने क्या किया, बिना कोई कांटेक्ट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. तो रेफरेंस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज. और जो चार्ज बॉडी ए पे डेवलप हो रही है उसको वो चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, दिस चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज. Now the third case that what I am going to do, now you are bringing this charge, this body B and closer to this body A. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अभी यहाँ पे जो reference body है I haven't removed yet. Now at the same time I am bringing this body B and touching it with the body A. But as of now अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या कर सकते हो. अभी पहला क्वेश्चन, ये बॉडी बी को मैं बाद में लेके आता हूं, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एज ऑफ नाउ इफ आई वांटेड टू मेक इट दिस बॉडी ए टू बिकम कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज,
तो उसको मैं पूरा नेगेटिव चार्ज कैसे करूंगा? तो बेसिकली क्या करोगे कि अब इस पार्ट पे आई विल बी डूइंग वन न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग ऑफ द बॉडी। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होगा बेटा? ग्राउंडिंग का मतलब ये होगा कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्राउंड के थ्रू आके इसको क्या कर देगा? दे विल न्यूट्रलाइज देम। अगर ये सारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो व्हाट विल हैपेंस कि ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं दे विल बी न्यूट्रलाइज, व्हिच मींस इट विल कंसिस्ट ऑफ, नाउ इट विल बी कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज। इसके बाद का स्टेप क्या होगा बेटा? नाउ दिस टाइम इवन इफ इट इज हैविंग दिस रेफरेंस बॉडी, लेट्स से अब यहां पे तो सारा बॉडी में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो नाउ दिस टाइम इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज हियर। नाउ सिंस दिस बॉडी, इन दिस केस द चार्ज across the other edge is completely neutralized. And one more thing, you haven't removed the reference body yet, so all the negative charge will be collected on the one end only. So now if you are removing this body, what will happen? ये वाला जो body होगा, it will become a completely negative charge. I mean, it is a completely negative charge, but those charges will be distributed uniformly across the surface. तो अभी यहां पे मैंने क्या कर लिया बेटा? इनिशियली मेरे पास न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी के पास मैंने क्या किया बेटा? एक रेफरेंस बॉडी लेके आया। अब ये रेफरेंस बॉडी पे जो भी चार्ज है उसको मैंने एक नाम दिया, दैट इज ऑब्वियसली इट हैज अ नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। अब इस इंड्यूसिंग चार्ज की वजह से एक चार्ज बॉडी ए पे डेवलप हुआ एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। नाउ सपोज करो कि आपने क्या किया? इस बॉडी को ग्राउंड कर लिया। ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड विल बी रीचेस टू द पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दैट एटम or body. So this body will be neutralized because of the excess of electrons are coming from ground. But at the same time, there are the presence of electrons which are being attracted to the reference body. अभी जैसे ही ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि ग्राउंडिंग वायर हटा दो और ये रेफरेंस बॉडी हमें उसके पास ही रखनी है। और थोड़े समय के बाद after some time later you will have to remove this body. The electron will be uniformly distributed here. तो क्वेश्चन ये उठेगा बेटा कि if you are charging the body without making any contact, how will you charge the body completely negative? How will you charge the body completely positive? As of now बॉडी बी के तो as of now कोई जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर बॉडी बी भी अगर लेके आओ तो सपोज करो अभी बी बॉडी न्यूट्रल है, अब इस बी को अगर मैं यहां पे रखूं तो what will happen? Since this body is completely negative charge and if I am bringing this body B closer to body A, now again the same phenomena will happens because it is now in this case this is a completely negative charge. Suppose करो इधर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. Now suppose I wanted to charge body B as a completely positive charge. तो वो कैसे होगा? अभी मैंने क्या किया? Initially I had three bodies. Two bodies were neutral and one body I had a reference body, right? अब मेरे को क्या करना है कि अब मैं वही न्यूट्रल बॉडी B which I have one touched yet, अब इसको यूज करते हैं. तो as of now I have body A is completely negative charge. ठीक है. अब इसी के पास मैं बॉडी B को लेके आ रहा हूं without making contact. So because of body A, this body will develop some positive charge across here and जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे because of this electrons they will repel and they will acquire on the opposite edge of the body. And my intention in this case is to develop entirely positive charge. तो अब मैं क्या करूंगा? Again I will ground this body B को क्या करूंगा? It will be grounded. Now if this is a grounded, so all the electrons this time will flow to the ground. ठीक है. अब सारे इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएंगे. तो बचा क्या थर्ड स्टेप में? अब यहां पे एक और चीज है कि यहां पे मैंने बॉडी ए का प्रेजेंस हटाया नहीं है. So still body A is present, although they are not in contact with each other. Now since I have grounded body B, all the electrons are moving to the earth. So only we left with the positive charge. So now after a while when you remove the grounding part, let's say these are the completely negative charge and body B is now a completely positive charge, and although positive charge is
accumulated in the one edge only. Why? Because there is still a presence of the body, the reference body, as in my case, body A. Now, the moment when you remove the body A, the body B become completely positive charge. And it will be, this charge will be uniformly distributed across the surface. Now, this is the method in which you can charge your body either negatively or positively by the help of the three bodies. Considering the body which is the reference body that you are using it, which is initially charged, they are called inducing charge. Those charge present on the reference body are called inducing charge. The charge present on the body or develops because of inducing charge called induced charge, right? And these are the methods I have discussed. So we had discussed so far three methods. The first method was कि अगर बॉडी को चार्ज करना है फ्रिक्शन की वजह से तो फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर बॉडी को कंडक्शन के थ्रू मुझे बॉडी को चार्ज करना है तो कंडक्टर का होना जरूरी है. एंड सेकंड थिंग, दिस बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. एंड थर्ड पार्ट, इफ आई वांटेड टू चार्ज द बॉडी विदाउट मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दैट पार्ट इज आल्सो पॉसिबल, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंडक्शन. सो induction is nothing. Induction is something is called a temporary electrification of the body by the presence of some external or some reference charge body, right? So this thing is, here I have electrified the body temporarily unless and until I grounded this body. तो जब यहाँ पे मैंने बॉडी को ग्राउंड कर लिया, उसके बाद क्या किया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ये बॉडी क्या होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्वायर हो गए. तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी विल बिकम बॉडी बिकम कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज. और सेकंड केस में क्या होगा कि अगर मैंने ऐसे रेफरेंस बॉडी लेके चला, तो रेफरेंस बॉडी को लेके अगर चलता हूं, एंड इफ आई एम ब्रिंगिंग बॉडी बी क्लोजर टू ईच अदर, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, बट द पोलैरिटी विल बी अपोजिट. करेक्ट? सो होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट. नाउ वी नीड टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर. यू माइट बी वंडरिंग कि दिमाग में सवाल तो उठा होगा ना कि अगर चलो मान लो पोलैरिटीज अगर बॉडी में डेवलप हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, और लेट्स से आई वांटेड टू नो दैट वेदर दिस बॉडी इज चार्ज और नॉट, हाउ वुड आई नो इट? डू आई हैव एनी अदर डिवाइसेस प्रेजेंट nowadays so that I can identify that whether this body is charged or not? So yes, we do have a device that is called. So what is electroscope? Electroscope is a device which is responsible for identifying the body whether it is charged or not. Is charged or not. So the construction of device is really simple. It consists of one glass jar with a rubber globe, and this the upper part is called a metal knob, and this is the completely stretched to the lower end. This is your conducting rod. It is completely vacuumed inside the glass jar, and the third part is this. The lowest part is consists of two thin strips. It could be, you can use any you can use a gold strip or aluminium. Either one will be required. Fine. Gold or aluminium foil or strip will be enough. So what will happen? Suppose that if you are bringing कोई भी चार्ज बॉडी अगर आप इनिशियली लेके आते हो, जैसे मान लो ग्लास लिया और वूल लिया, ठीक है, ग्लास और सिल्क ले हो, इट्स ओके. तो अगर ग्लास और सिल्क भी अगर आप लेके अगर आप रब करते हो, तो रब करने के बाद ग्लास एक्वायर पॉजिटिव, सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो सपोज करो ग्लास को लेके आपने यहाँ पे टच कर दिया, और बिकॉज इट इज अ मेटलिक नॉब, देन डेफिनेटली इट विल स्टार्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू द एल्यूमिनियम और कोई भी गोल्ड का लीफ के पास पहुंच जाएंगे. सो दोज इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग फ्रॉम द ग्लास, it will be develops across this foil. Now if they are diverging, what does it mean? If they are diverging, that will indicate that the individual body is charged, and if they are not diverging, that indicates that this body is not charged. So अगर कोई भी चार्ज बॉडी अगर एक उसके इधर यहाँ पे मेटल नॉब पे अगर आप टच करवा देते हो, टच करने से क्या होता है कि बॉडी का जो ये फॉइल है, they will start diverging, and if it is not diverging, that means not charged. Now the question is, अगर सपोज करो इनिशियली आपने
ग्लास रोड को टच किया, तो सिंस ग्लास रोड वाज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉसिबिलिटी की मेटल नॉब क्या करेगा, मेटल नॉब उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, राइट. मेटल, बिकॉज मेटल इज ऑब्वियसली इट्स कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ, because it has some excess of electron, that's why we are considering it as a metal. तो कंडक्टर के बाद तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे. सो इट मींस that means some of the positive charge develop across this leaf and the other leaf also acquires some positive charge, and if they are having a positive charge they will start diverging. Now at the same time if you are bringing, suppose दूसरा बॉडी अगर आप लेके आते हो, अभी इनिशियली मैंने ग्लास लिया, आप सपोज करो सिल्क लो, या फिर प्लास्टिक लेके आते हो, प्लास्टिक रॉड लेके आते हो, प्लास्टिक को भी कोई बॉडी के साथ रब किया, चलो मान लो वुल के साथ आपने रब किया, तो वुल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो अभी प्लास्टिक को अगर जब आप यहाँ पे टच कराते हो, टच नहीं करना, आप इस बार क्या करते हो, जस्ट मेटल नॉब के पास आप यहाँ पे टच, यहाँ पे सरफेस पे आप बस लेके आ रहे हो, यू हैवंट टचिंग इट. सो व्हाट विल हैपन, सिंस इट इज अ नेगेटिव चार्ज, ये जो पार्ट होगा वो और डाइवर्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि जो बॉडी जो अब इस मेटल नॉब के पास जो लेके आ रहे हो, इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम पोलैरिटी. और अगर सपोज करो आप ये वुल को आप लेके आ रहे हो, वुल को अगर आप लेके आ रहे हो, तो वुल को जैसे ही आप यहाँ पे रखा मतलब कि अपने कांटेक्ट में नहीं लेके आए, बट स्टिल इट इज ऑन दी vicinity of the metal knob. So what will happen, the divergence of this gold strip or aluminum strip will be reduced, and that indicates that the particular material or particular body is having a opposite polarity. So this electroscope has a essential, like the main usage of electroscope is to identify that whether the body we are using is having the same polarity or opposite polarity. So this is the use of the electroscope. I hope it is clear. Now after this we are going to discuss another part, and that part is called Coulomb's law. So Coulomb's law. So what is the speciality about this law? We need to understand this part. So around in 17th century, in the mid of the 17th century, French engineer or physicist whose name was Charles Augustin de Coulomb, who had done experiment based on torsal balance, in which he had used the 2-point charges, right? Charge bodies. He had used the 2 charge bodies, and he did experiment exactly as same as the experiment performed to find the gravitational constant. And what he did, generally he used the 2-point bodies which are obviously charged, and he separated them a different distance apart, and depending upon the distance and depending upon the divergence, that body will move. Suppose that if I have how he did, he used the torsal balance, and I'm just उसका मैं upper part में आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो upper surface था, upper surface has a graduation of force. So it is having a needle, and that needle is connected with the body, and these 2 bodies were charged. And there were another thing which we call it as a meter. I mean there was a scale of centimeter scale in between, meter scale or centimeter scale. There was a ruler which was used to measure that if they are twisting, obviously things were isolated so that external circumstances would not disturb them. So if these charges are attracted, if 2-point charges अगर मान लो कि अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो टोर्सल बैलेंस का कंस्ट्रक्शन जनरली इस तरीके से है कि ये इनको क्या किया है कि एक बॉक्स के अंदर इनको पैक किया गया था, बॉक्स अंदर ट्रांसपेरेंट शेल के अंदर, जहां पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को ज्यादा होना नहीं चाहिए, उसको वैक्यूम ही ऑलमोस्ट कर दिया, ठीक है. और वैक्यूम अंदर का पार्ट पूरा कंप्लीटली वैक्यूम कर दिया, और ऊपर से क्या किया, ऊपर एक नीडल लगा है, नीडल का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे एक वायर रखा है, कंडक्टिंग वायर, और वायर के साथ एक और वायर यहाँ पे लगाया है हॉरिजॉन्टल वे में, और हॉरिजॉन्टल वे में लगाने के बाद 2-point चार्जेस यहाँ पे रखाया हुआ है, ठीक है. ठीक है. अब मेन पार्ट क्या था कि अब जैसे ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इफ बॉडी आर हैविंग अ मास एंड इफ बॉडी आर चार्ज, दे विल स्टार्ट
what he observed कि it will start moving. तो अगर बिकॉज वो मूव कर रहा था तो उसमें उसने दो चीज उसने ऑब्जर्व किया. तो मतलब दो चीज ऐसा क्या ऑब्जर्व किया कि पहला चीज कि जैसे जैसे चार्ज की ये तो दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. और दूसरा चीज, अगर दो बॉडीज के बीच में चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ा दी जाए द फोर्स विल आल्सो इंक्रीजेस. So that he had done a quantitative experiment and made an observation, and those two observations were, the first thing that he had noted that if the forces or if the two charges are separated by certain distance d, and if the distance between the two charged body are more or less, the force will be reduced. So he stated that the force is inversely proportional to the square of the distance between them. This is called inverse square law. The second thing he had discussed, that force is directly proportional to the product of the charge present on the bodies. Product of the charge present on the body का मतलब क्या होगा कि जितना चार्ज इन दो बॉडीज के ऊपर होगा उतना ज्यादा फोर्स of attraction या फिर repulsion होगा. Now the second part is, how would I know that whether the body will be attracted or whether the body will be repelled? So that depends on the polarity of the charge. So when you're combining these two equations, you will come up with this equation: F is proportional to Q1 Q2 upon R square. So if the charge is, or let's say the value of the force is negative, if the value of force is negative, then the nature of the force is, if the value of the force is negative, then the nature of the force is attractive. And if the value of the force is positive, the nature will be repulsive. Right? So basically, if I try to understand this part, this constant value, this part is called reduces to K times of Q1 Q2 upon R square. Now the K is called electrostatic constant. The value of K is called electrostatic force constant, and the value of K is 1 by 4 pi epsilon naught, and the unit of the K will be, the unit of the K will be how much? Since we know that the unit of force is Newton, and the unit of charge is, SI unit of charge is Coulomb, and the SI unit of this distance is meter. So the unit for the K will be Newton meter square by Coulomb square. So this is the unit, and the value of this part will be 8.85 into 10 to the power minus 12. So since this is the value of epsilon, we do not need to use this value. So if there is a term called epsilon, this is called permittivity of free space. Permittivity of free space, whose value is 8.85 into 10 to the power minus 12. Now the unit of epsilon naught, if based on this equation, it will be epsilon naught is a inverse of whatever the unit of the K will be, the inverse of K will be the unit of epsilon naught. So unit of epsilon naught will be C Coulomb minus 2. Right? This will be inverse of this. So it will be Coulomb square. Pen is not working. Coulomb square divided by Newton meter square. So this is the unit of it. ठीक है? If you substitute the value of absolute, this is called epsilon naught. ठीक है? अब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, ये वाले इक्वेशन में रखो. तो ये वाले इक्वेशन में रखने के बाद क्या आएगा, 1 by 4 pi. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14. सो इट विल बी 3.14 into 8.85 into 10 to the power minus 12. इसको सॉल्व करने में क्या आएगा बेटा, 9 into 10 to the power 9,
न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब सवाल होता है कि ये जो आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपने यूज किया, इसका मतलब क्या है, ये समझाइए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये हुआ कि इट विल टेल यू, अभी एज ऑफ नाउ आई हैवंट डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। So when we start discussing the concept of electric field, at that moment I will touch this topic of permittivity. But main part आपको क्या देखना है कि absolute permittivity of free space reflects the strength of that particular electric field in the particular medium. So if I am taking a free space, that means it says कि my medium, as in my case, is vacuum. So if medium is vacuum, this medium is, if I consider this medium is vacuum, so just hold me a minute. चलो ना वो परमिटिविटी से मैं आपको समझा देता हूं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब क्या होगा, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा। So basically it will tell you that the strength of the electric field at the particular medium. अगर यहां पे फ्री स्पेस यूज कर रहा हूं, फ्री स्पेस का मतलब क्या होगा कि we are using vacuum. Understood? We are placing this body or anything in the vacuum medium. Now if you are placing the body in a vacuum, so even if there will be an electric field, so in the presence of electric field, how much that particular medium will be influenced. So that is understand with the help of permittivity. ठीक है, तो permittivity is something connected with the electric field. Electric field क्या होता है, that will be discussed in a coming lecture. So don't worry about the electric field. So as of now, just understand that this is the field generally. For a basic understanding, just consider it कि ये field कब डेवलप होता है, जब बॉडी चार्ज होगी तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, तो the value of permittivity कितनी है बेटा, 8.85 into 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। And if I write the dimension of the, let's say, the force constant, this electrostatic force constant, so what will be the dimension of this case? The dimension will be, you can write it out in the terms of mLT, right? So since this is a Newton means force into acceleration, so that will be m1 L1 t minus 2, and meter square, which is obviously the dimension of length, which is repeated 2 times, so that will be L2, and the denominator, it is a Coulomb square, that means the product of current into time is a charge, so that will be a raised to 1 and t raised to 1. So if I write the dimension of the K, the dimension of the K will be, so dimension of the K will be how much? It will be this will be m1 L1 t minus 2 into, that would be L2 divided by, this would be a1 t1 raised to 2. So this become m1 L3, this will be t minus 2 divided by a2 t raised to 2. So m1 L3 a raised to minus 2 and t raised to minus 4. So this is the dimension of K, and if I ask you what will be the dimension of epsilon naught, so it will be inverse of this. So this would be m raised to minus 1, l raised to minus 3, a raised to plus 2, and t raised to 4. So this is the dimension of epsilon naught. Clear? So this were the basic ideology of Coulomb's law. Coulomb's law stated that if two bodies are separated by certain distance d, so it will be experiencing the force. The nature of force would be negative if they are having a negative result, and if it will be positive, it will having a result if the result is a positive, right? And the force depends on the two factors. First, the product of the charges, and the second thing is the distance between them. Clear? Now we are going to discuss one more thing, and let's discuss one more part, and that is if I change my medium. If I change my medium, will
changing of medium affect the value of this force, electrostatic force? So let's discuss that part. So the second part that I'm going to discuss is called relative permittivity. So as of now we have discussed about the permittivity. Permittivity is something which tell you the strength of the electric field, or tell you that whether in the presence of electric field that particular medium will be influenced or not. उस मीडियम में कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर मीडियम वीक हो जाएगा या फिर स्ट्रांग होगा, या फिर उसके वजह से दो बॉडीज के बीच में फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा. दैट आइडिया इज जनरली like we can extract it with the help of permittivity. ठीक है. अब मुझे क्या समझना है कि relative permittivity we are going to discuss. Relative permittivity. Under the relative permittivity, this is represented by epsilon naught, epsilon r or k. Let us discuss. This is represented by er or with k. So if I have, let's say, as I have mentioned, the value of the force in the vacuum is represented by k times of q1 q2 by r square, right? Now the value of k can be written as k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This is the force in vacuum, right? Now let's say I have changed the medium. The medium is, let's say, the permittivity of that medium is epsilon naught. So that the force on that medium is 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. And now in this case, this epsilon represent permittivity of any medium, right? So this is the epsilon represent the permittivity of that medium. तो अभी यहाँ पे क्या होगा बेटा कि let's say this is your first equation, other is your second equation, and if I divide this first with the second equation, the first is vacuum divided by force in medium. So this become 1 by 4 pi epsilon naught into 1 by 4 pi epsilon, and here you will have q1 q2 by r square into q1 q2 upon r square. So this part will be cancelled. This is not r2, this is r square. All parts will be cancelled. 4 pi 4 pi will be cancelled. So you left with this equation. This is epsilon naught, and this is epsilon naught, sorry. So you left with f vacuum by f medium is equal to epsilon by epsilon naught, and this part is called relative permittivity, that is er or k. So the ratio of the permittivity of the medium by the permittivity of the free space is our term, what we call relative permittivity, right? Or it is also represented by er or with the this letter k, right? अब ये जनरली ये जो k है ना, ये आपको कहाँ पता चलेगा जब हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे ना, वहां पे k का बहुत यूसेज है. तो एज ऑफ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया कि अब मैंने यहाँ पे er की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे बता दी. तो अगर यही चीज को अगर मुझे थोड़ा चेंज करनी है पर्टिकुलर इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई प्लेस्ड अ बॉडी इन अ nd medium and I wanted to write this part, let's say f, what will be the expression of f medium in terms of relative permittivity. So I know that f medium is f1 by 4 pi epsilon into q1 q2 by r square, considering the charge of the body are different and different separation between them is r square. ठीक है. तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, रिलेटिविटी परमिटिविटी के फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए. सो इट बिकम्स 1 by 4 pi er e naught times of q1 q2 by r square. So this becomes f medium is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught er. ठीक है. So this becomes f medium is equal to, ये इक्वेशन किसका है बता, into r square भी है हमारे पास, into 1 by r square. तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, er, और यहाँ पे क्या बनेगा r square. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन आपको बता रहा है, this is nothing but this is your force in vacuum. So this is 1 by er is equal to f of vacuum. So you can relate this statement, you can understand with this expression that in a medium, the force is reduces by this many time as compared to the force which were in vacuum.
तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है बेटा कि अगर मीडियम के कंपेयर में कोई दूसरा मीडियम में अगर बॉडी को रखते हो तो उसमें फोर्स अगर डिक्रीज होता है तो कितने अमाउंट में डिक्रीज होता है. तो जनरली वैक्यूम में जो बॉडी के ऊपर फोर्स जो लगता है इट इज ऑप्टिमम. दिस इज इन दैट मीडियम फोर्स इज मैक्सिमम. उसके अलावा कोई भी मीडियम में आप लेके जाओ फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. अब रिड्यूस होता है तो कितना टाइम रिड्यूस होता है, दिस मेनी टाइम इट इज रिड्यूस. ठीक है. अब यहां पे इफ आई आस्क यू दैट व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, द डायमेंशन ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी इज 0 because the numerator and denominator dimensions are the same, so they will be cancel each other, so dimension will be 0. So they are dimensionless. Relative permittivity is dimensionless quantity, remember. And yes, this is the relation. It states that the force in the vacuum or force in the medium is decreases by this many times compared to the force in vacuum. Clear? अब मेन थोड़े वो टॉपिक्स और डिस्कस कर लेते हैं Coulomb's law के बारे में. The first thing, the force, the nature of the force that stated by the French engineer, yes, obviously Charles Augustin, that the electrostatic force is conservative in nature. First part is, what is the conclusion that has been made? That first thing is, the force is conservative in nature. Conservative in nature means they are only depends on initial and final position. So this is the force which is called, which we are calling it as electrostatic force. And second part, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. अब इन्होंने क्या किया, दो चार्ज को जब उन्होंने रखा हुआ तो दो पॉइंट चार्ज को रखा. जो भी ये पूरा एज्यूम्शन है, जो भी ये थियरी जो बनाई गई है, it has made on certain assumption. The first assumption is that charge must be at rest. अगर चार्ज रेस्ट पे नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं है. तो ठीक है. तो दूसरा कंक्लूजन क्या है कि चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट. और एक और कंक्लूजन है दैट द चार्ज इज नथिंग बट दे आर पॉइंट चार्ज. दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज. व्हाई? बिकॉज द डायमेंशन of the charge must be extremely smaller as compared to the distance between them. So generally this charge are considered as a point charge. Charge considered as point charge. Point charge का मतलब क्या होता है बेटा? Their dimensions. Point charge मतलब क्या होता है? Dimensions is less compared to distance between them. Let me write it here. Point charge means the dimension, its dimension is less compared to distance between them. Compared to less distance between them. ठीक है. Third, now the fourth part is, now we had discussed about point charge. Now charge must be at rest. Conservative part is discussed, and the fourth part is that this electrostatic force is central force. This force is central force. Why we are considering it as a central force? Because अब दिमाग में ये भी सवाल उठता है कि अगर force, since force is a vector quantity, तो अब force का डायरेक्शन हम क्या लेंगे? कि अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या है? If I have two bodies, let's say this one is your Q1 charge and this is your Q2 charge, and if you are considering the separation between them is R, so the direction of force is considered from the center of the body to the center of the another body, and that must be along the line joining the center of one body to the another body. मतलब कि ये लाइन कहां से आ रही है? ये जो लाइन हो रही है center of one body to the center of this body. तो फोर्स होगा वो इसी लाइन के अक्रॉस होगा. ठीक है. यार जो मैंने लिखा है ना, मैं क्लियरली मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा. Body Q1 and this is body Q2. The force is along the line joining center of two charges. So this is the direction of the force. If they are attractive, so the direction of the force will be toward each other, and if they are repulsive, they will be opposite. So if they are attractive, this would be a F1, this would be a F2, and if they are repelling, so the direction will be opposite. This will be a F1 or this will be F2.
You might be confused that what is F1, what is F2. This is the force of electrostatic force develops between the direction of the force due to the two charge bodies, right? So due to Q1 charge, Q2 charge will experience a force that will be Q2, F2, and due to the Q2 charge, Q1 charge will experience a force, and that will be denoted by F1, right? So that's why I have stated F1 and F2. Now, these were the basic ideas. So yeah, we need to write the fourth part is, this is central force. The force is central force, and the direction of the force is along the line joining. Direction of force is along line joining center of two bodies, charged bodies. ठीक है? और फोर्स कैसा होता है बेटा? सेंट्रल फोर्स. Force are central force. ठीक है? So this was the part we had discussed. So hope यहाँ पे basically I hope I have covered almost everything. And one more thing, yes, related to the relative permittivity, this part is also discussed. Yeah. So if I ask you, let's say in any medium, relative permittivity, let's say 80. So what will you interpret out of it? So you will simply interpret that the force in that medium is reduces by 80 times compared to the force on vacuum. So this is the interpretation of the forces in both mediums, provided a medium are changed. अब ये सारी चीजें क्या थी बेटा? ये सारी चीजें एलिमेंट्री इन द सेंस मेन पार्ट. अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्स की द मेन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो जो भी थियोरेटिकल पोर्शन था इज नाउ हैड ऑलरेडी कवर्ड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू include some mathematical aspect. So in the coming lecture I am going to introduce the vector form of Coulomb's law. So that will be more it is that part is very important, and obviously these parts were also important. So कि हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया. इसमें हमने जो भी हमने सीखा, जो बेसिक मैथड्स हमने सीखी कि भाई और ऐसी कौन सी मैथड्स है और कैसी मैथड्स है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. दूसरा पार्ट हमने ये समझा कि कंडक्शन एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में तीनों में डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको आइडिया दिया. एंड थर्ड पार्ट वी हैड स्टार्टेड विद Coulomb's law, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि द फ्रेंच इंजीनियर ने कुछ एज्यूम्शन, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे दो कंक्लूजन्स थे, एंड दैट कंक्लूजन्स वेयर दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, है ना. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगेगा, बी इट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. और दूसरा ये कंक्लूजन था कि रिपल्सन बिटवीन देम, और द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, and the strength of that force is also depends on the distance between them. तो ये दो चीज थी जो Coulomb's law में हमें पता चलता है. और भी थोड़े कंक्लूजन्स थे that the nature of the force is conservative in nature. दूसरा हमने ये पढ़ा कि charge is the charge, उन्होंने ये assumption obviously लिया था because ये assumption के बिना ये the पूरा theory वो half है, partial है. So yeah, this was also assumption कि charge considered as a rest. Third assumption that charge is also a point charge. Point charge मतलब मैंने ये बताया कि charge का जो dimension है, तो dimension is smaller compared to the relative distance between them, right? उसके बाद हमने क्या जाना बेटा? उसके बाद हमने ये जाना कि the direction of the force is obviously along the line joining from the center of the two charges, right? And the last one is central force. Central force मतलब क्या होता है कि obviously central force are connected. Means central force, the force is acting only from center to center of the two bodies. ठीक है? और एक और चीज मैंने नहीं बताया कि Coulomb's law ऐसा नहीं है कि हर जगह वैलिड है. Coulomb's law का एक लिमिटेशन है. Coulomb's law का लिमिटेशन क्या है कि if you are thinking that what will be the value of force inside let's say if you are considering, अब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में एटम का स्ट्रक्चर बताया था, तो एटम का न्यूक्लियस रेंज भी बताया था कि न्यूक्लियर का रेंज जो होता है that is 10⁻⁻15 मीटर. So if you are discussing the electrostatic force within, I mean discussing about the Coulomb's law, whether the Coulomb's law applicable within the nucleus, the answer is no. The answer is no. The Coulomb's law do not valid with the dimension lesser than the diameter of
न्यूक्लियस। तो उससे ज्यादा होगा तो ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करेगा, उससे कम होगा तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन मतलब कि ये इसका लिमिटेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस I think I have mentioned that we are going to continue with the vector form of Coulomb's law, right? So तब तक के लिए आप पढ़ते रहो बिंदास, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। कमेंट में आप टाइप करके आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। और सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको सजेशन में आपको यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन, तो यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू से। एंड बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम vectors law or vectors form of Coulomb's law, right? So thank you so much, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लास्ट पार्ट है, मुझे भी थोड़ा और लगता है, मेरे लिए भी नया है तो बट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।